मैं फिर से बोले जा रहा हूँ। हेलो। यस सर, आ रही है। गुड इवनिंग सर। तो we were doing oblique collisions, right? And I hope that everybody has attempted or started HCV. Hopefully, some of you have finished. So today we are going to go beyond HCV slightly. These are the questions that you are not going to find in HCV. The principles, they remain the same. The concepts, they remain the same. But you have to be slightly more careful. So, question number 1 is, particle of mass m particle of mass m hits a wedge of mass capital M horizontally. After collision, the velocity of m is vertically upwards. Find E. Okay, so this is the first question. सर वेज फिक्स है कि मूवेबल? हाँ, वेज फिक्स है कि मूवेबल? नहीं, वेज तो मूवेबल है ना, इट्स नॉट फिक्स्ड. ओके सर. फिक्स्ड होता तो क्या होता, व्हाट वुड हैव हैपेंड? रिबाउंड हो जाता. हाँ, मतलब हाँ, वो एक्चुअली एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करता है इफ E was 1. बट यहाँ पे इट इज नॉट फिक्स्ड. नो, मास दिया हुआ है, दैट मींस दैट इट इज नॉट फिक्स्ड. नहीं यार, मतलब
No, initial velocity is not given. Only thing is given that initial velocity is horizontal. नहीं आर्यन का सही है. So on impact, what is going to happen? On impact, there will be a normal reaction on the particle like so. There will be a normal reaction on the wedge like so. And because of this, there will be a normal reaction due to the floor on the wedge like so. हाँ, -1 नहीं हो सकता. So what can I do here? Can I apply the V1 prime V2 prime वाले formula? So is V1 prime is equal to and V2 prime is equal to applicable here? Can I apply? नहीं. No. Not applicable. Why is it not applicable? Sorry. Not applicable because of component of external impulsive force along the line of impact. So the component of N1 will definitely be in this direction. The component of N1. So this is the external force impulsive. ऐसा माइंड मेकअप मत चलो 50 कॉस्ट करो
अरे यार ये कहाँ से सर एक बार वापस बताओगे क्यों नहीं एप्लीकेबल है? हाँ जब ये पॉइंट ऑब्जेक्ट यहाँ पे इम्पैक्ट करेगा, it will apply an impulsive reaction N on the wedge like this. It will apply an impulsive reaction on the wedge like this. Now this impulsive reaction N has two components. This impulsive N has two components. The horizontal one and the vertical one. नहीं chain of events देखना है भैया हार्दिक, ऐसे नहीं सोचा जाता है। जब वो पॉइंट पार्टिकल इस वेज को स्ट्राइक करेगा तो वेज के ऊपर एक इम्पल्सिव फोर्स लगेगी जिसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होएगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट होएगा। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन ये इंश्योर करेगा कि ये वेज की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में अचानक से डेवलप हो जाएगी। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन को इंश्योर करना चाहिए कि वेज के पास अचानक से इस डायरेक्शन में वेलोसिटी आ जाएगी, लेकिन ये वेज नीचे तो जा नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि जो फ्लोर है इट विल अप्लाई इन रिएक्शन टू दिस as a consequence of this vertical component of normal reaction. The floor will apply a vertical normal reaction N1 on the wedge. Now this N1, the vertical normal reaction, will have a component along the line of impact and perpendicular to the line of impact. So on the wedge then, okay, on the, I'll go to the next slide. On the wedge, the external, I'm only going to draw the external normal reaction, impulsive. On the wedge, the external impulsive normal reaction will be this, which will have two components, and the two components will be this and this. Or at least we can say that we can we can break the normal reaction into two components, one along the line of impact and the other perpendicular to the line of impact. Right? So we have the external impulsive force on system. I can include the point particle here. Whatever is an internal force, I don't need to draw it. So this will be the component of external impulsive force along the line of impact, and this will be the component of external impulsive force perpendicular to the line of impact. Okay? Yes, sir. Yeah, समझ में? Yes, sir. So now I will say that since there is an external impulsive force along the line of impact, this implies that the formula for V1 prime and V2 prime cannot be applied. Okay. So what can be applied? What can be applied? So the initial picture is that we have M moving horizontally, M stationary.
And the final picture is that V से ये move कर रहा है, and let's say that V1 से ये move कर रहा है. Let this be. So this is the initial picture. This is the final picture. So number one, since F external impulsive along the x-axis is equal to 0, this implies that momentum along the x-axis must be constant. नहीं, pseudo force, external force नहीं होती. So we get mv naught is equal to capital MV. That is one equation that we get. Second equation come from the definition of E. So E is equal to the relative velocity after collision divided by relative velocity before collision. लेकिन relative velocity after collision जो होएगा, relative velocity after collision जो होएगा और before collision जो होएगा, we only have to consider the components of these velocities parallel to the line of impact. We are not bothered with the actual velocities. We are not bothered with the components of these velocities perpendicular to the line of impact. Let me quickly find this. Remember, the red line is along the normal reaction. So vertical से angle theta बनता है. ये angle 90 minus theta हो जाएगा. So this will be mv naught sin theta. This will be m क्यों लिखा है मुझे मालूम नहीं है. This will be v1 cosine theta, and this will be v sin theta. So what is the velocity, relative velocity after collision? Well, the relative velocity after collision is apparently this and this. Line of impact is nothing but the normal reaction. That means you make a line perpendicular to the surface. So if it is a point particle and a surface, the line of impact will be perpendicular to the surface. If the collision is between two objects, like two spheres, for example, then it will be a line which will be perpendicular to the common tangent. The tangent or normal, तो वैसे भी I think circles में पाते हैं. So it will be a line passing through the centers of the two spheres. Right. So it is just the normal reaction, the direction of normal reaction, which has now been redesignated as line of impact. So if you look at the two red lines, they would be the normal reactions, or you would draw the normal reaction on either small m or capital M in that direction only. In fact, I have drawn the normal reaction on capital M and small m in that direction only. The blue arrow here is the normal reaction by the floor on the wedge. Right? The line of impact is the normal reaction or the direction of normal reaction between the impacting objects, between the colliding objects. Okay? आया समझ में कविता? Yes, sir. So the velocity after collision of this is v1 cos theta in this direction.
and the velocity after collision of this wedge is v sine theta in this direction. Now you see they are moving away from each other. Bilkul, yes. So they are moving away from each other. Okay. Since they are moving away from each other, the relative velocity must be the sum of velocities. So we write v1 cosine theta plus v sine theta. Okay, and divided by the relative velocity before collision. Before collision, it will be equal to v naught sine theta. So this is equal to v1 by vo cot theta, right? Plus v by vo sine theta को cancel हो गया. Now v by vo we already know. This is here. V by vo. V by vo is m upon n. I can replace that here. But I still don't know the value of v1 by vo. How will I find that? Along line दोनों के Sir, v1 sin theta equal to v naught cos. component same रहेगा. जो velocity Not components, sin theta equal to v1 cos theta. हाँ, जो velocity components perpendicular to line of impact है. For this guy it is v naught cos theta, and for this guy it is wedge का नहीं बनाना. This guy it is v1 sin. So the components of velocity which are perpendicular to the line of impact, right? I'm going to change the slide once again. I'm going to change the slide. Please take a screenshot if you want. So since velocity components perpendicular to the line of impact, do not change. We get from the equation of the blue arrows, we get v naught sine theta is equal to v1 cosine theta. उल्टा लिख दिया, sorry. So this means that v1 by vo is equal to, again, cot theta. E is equal to v1 by vo cot theta plus v by vo. सर उसमें v cos theta ऐड नहीं होगा? किसमें? किसमें? अभी जो आपने लिखा था. नहीं. Velocity component of object not subjected to, और ऐसे मैं इसको लिखता हूँ, of object subjected to one impulsive force. In this case, we are talking about the point particle. This is not velocity component of the system. It's the velocity component of one object out of the two which are colliding, which remains constant. Logic समझो इसका. ये पार्टिकल यहाँ पे आया, ये पार्टिकल यहाँ पे आया, इसके ऊपर
इस डायरेक्शन में इम्पल्सिव फोर्स लगी, ये एक्चुअली एक्सटर्नल इम्पल्सिव फोर्स है, इस पार्टिकल के ऊपर इस डायरेक्शन में इम्पल्सिव फोर्स लगी, इस पार्टिकल की इस डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी पे फर्क नहीं पड़ने वाला, इस पार्टिकल के इस वेलोसिटी कंपोनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगने वाली है। आया अभी समझ में कि उसमें हम v cos थीटा क्यों नहीं ऐड कर रहे हैं? v cos theta would be the velocity of the wedge, but here we are not saying that velocity component perpendicular to everything, perpendicular to line of impact of everything is same. No, we are saying that velocity component of one object, in this case the point particle, does not change. Now you cannot make the same argument for the wedge. You cannot make the same argument for the wedge, because the wedge, if you only look at the wedge, then the wedge has been subjected to an impulsive force like this, and it has been subjected to an impulsive force like this. So there are no axes that you can choose. There is no axis that you can choose along which the wedge is not subjected to an impulsive force. Therefore, the velocity of the wedge along any axis cannot remain constant. In contrast, the point particle has only been subjected to this impulsive force. Therefore, the velocity of the point particle along this axis may remain constant. Okay? तो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। So this will be equal to cot square theta plus m by n. चल एक और if I can make the diagram. So a sphere is traveling on a small surface. It strikes two identical stationary spheres symmetrically, and as a result, it comes to a rest. ये वाला अनिश
हाँ identical है यहाँ पे. Yes, all the three spheres are identical. हाँ पार्थ बिल्कुल सही. Then what is going to happen? So this guy was moving with velocity v. These two were stationary. After the collision, this guy will be stationary. These two guys will be moving with velocity v.
I hope that everybody is agreeing with the direction of the velocity that I have drawn. V1 should be along the normal reaction between the two spheres. अब इस डायग्राम को यूज करके ट्राई टू डू द क्वेश्चन. हाँ, पार्थ का तो सही था पहले से. शौनक तेरा गलत है. चैतल कुछ गड़बड़ है. आर्यन बिल्कुल सही. हाँ शौनक. So first I apply the definition of E. Unfortunately, the definition of E is applicable only to two colliding objects. But here we are having three colliding objects. That does not matter.
that really does not matter. I will choose this. I will choose this as the system. And with this choice, then I can only apply the value of E here. So this is very easy. Final velocity after collision, relative velocity after collision. The first sphere is at rest, the second sphere is moving with velocity v1. But we have to be careful. These must be components of velocity along the line of impact. That's okay, because the line of impact anyways is this. So after collision, the only velocity existing, that of the second sphere, is already along the line of impact. The velocity of the first sphere before the collision, okay, velocity of the first sphere before the collision along the line of impact, we have to find the component. So this will be 30 degrees, right? Because the whole angle is 60 degrees, because there is an equilateral triangle here, out of which two sides I have drawn by the dotted yellow lines. This will be V cosine 30 degrees. Okay, अब करो, अब आगे बढ़ो. So what to do now? अब क्या करें? All I need is V1 upon V. If I could find V1 upon V. सर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे सर हॉरिजॉन्टल एक्सिस along x. So if I take this whole thing, as a system, then there are no forces, then there are no forces on the system along any axis. So along x-axis, then what I can do is I can conserve momentum, and I will get initial momentum as mv and final momentum as 2mv1 cosine 30 degrees. m और m कैंसिल हो गया. मेरे को v1 upon v की वैल्यू चाहिए. v1 upon v is equal to 1 by 2 cosine 30 degrees. Therefore, E is nothing but 1 by 2 cosine square 30 degrees. And cosine square 30 degrees is equal to 3 by 4. This will be equal to 2 by 3. Right? So this is the value of uneven होते तो uneven मतलब क्या हुआ भाई? शर्मा, uneven मतलब सर जो स्फीयर्स का मासेस होता है इक्वल ना होके और एक परफेक्ट सिमेट्रिकल तब लोचा हो जाता है. तब फिर यहाँ पे m और m कैंसिल नहीं होता.
और सर एक सेक स्क्वायर थीटा भी आ जाता। सर एंगल भी दिया होना चाहिए था फिर। हाँ ओके नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाँ चेतन, सब लोग ने अज्यूम किया है क्या कि E इज इक्वल टू 1 है? गुड क्वेश्चन अनीश। E तो मैंने दिया नहीं। हाँ मैं करके दिखाऊंगा। So one thing is for sure that the velocities of, हाँ अरे मैं तो पहले पूछना चाहिए था ना। अभी देखते हैं उसकी जरूरत E की जरूरत है या नहीं, मेरे को याद नहीं। So one thing is for sure that the velocities of the particle and the hemisphere will be equal and opposite after the collision, right? Since there is no external force on the system along the x-axis, therefore the momentum of the system along x-axis must remain conserved, and therefore there cannot be difference in velocity because their masses are same. Okay? We also know that just before hitting, the velocity of the point particle will be root 2 gh in the downward direction, right? Okay. हाँ वर्कआउट कर रहे हैं. So the first thing is that हाँ रुक जा पार्थ. E क्या अज्यूम किया पार्थ ये आंसर निकालने के लिए? So the first thing is the line of impact, and the line of impact is already drawn. It is the green line which is slanted at an angle of theta from the vertical. That is the line of impact. Okay. So just before the impact, the velocity of the point particle is this. Therefore, its component along the line of impact and its component perpendicular to the line of impact we can work out very easily. This angle is theta, then this angle is theta. This will be root 2gh cosine theta. This will be root 2gh sine theta. Okay. Now the velocity of the point particle. I just want to rub out this arrow and I want to draw it somewhere here. The velocity of the point particle after collision is v, like this. And this also has components which are along the line of impact and perpendicular to the line of impact. Okay. And with the horizontal, this line is going to make an angle of 90 minus theta from geometry. Therefore, this component should be v sine theta and this component should be v cosine theta.
Now we know that for the point particle, the value of the component of velocity perpendicular to the line of impact may not change. So since velocity component of particle perpendicular to line of impact will not change, therefore we have root 2 gh sine theta is equal to v cos theta. Therefore v is equal to root 2 gh tan theta. And I did not have to assume any value of E. E से मेरा E की वैल्यू से मेरा कोई लेना देना नहीं. But now I can figure out the value of E, or if E was given, then I can figure out the value of theta, either ways. So since theta is given, let's figure out the value of E, which would be the second part of the question. Second part of the question. हाँ बिल्कुल आ रहे हैं, NDT से भी आ जाएगा. Why is V independent of E? Because of the fact that velocity components parallel to perpendicular to line of impact do not change. वो याद है प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने एक बॉल को फेंका तो उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो हमेशा v cos थीटा रहेगा, चेंज ही नहीं हो सकता. अगर मैं आपको बोला कि भाई मैंने 60 डिग्री पे एक पार्टिकल को फेंका, प्लीज टेल मी द वेलोसिटी व्हेन मैंने v नॉट वेलोसिटी से 60 डिग्री पे फेंका, प्लीज टेल मी द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन द एंगल ऑफ द वेलोसिटी इज 45 डिग्री. कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको और कोई इंफॉर्मेशन चाहिए. Supposing that velocity is v, so v cos 45 should be equal to v naught cos 60. उसी तरीके से यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी है और जो फाइनल वेलोसिटी है उसका पार्टिकल के लिए, पॉइंट पार्टिकल के लिए उसका एक कंपोनेंट, इनिशियल वेलोसिटी का एक कंपोनेंट, फाइनल वेलोसिटी का एक कंपोनेंट, ये दोनों बराबर होने जा रहे हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग एल्स. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये पॉइंट पार्टिकल को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इंपल्सिव फोर्स लग रही है और इस पार्टिकल की वेलोसिटी इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट काइंड ऑफ इंपल्सिव फोर्स और द काइंड ऑफ कोलिजन, इररिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल परपेंडिकुलर टू दिस force that is being applied by the particle cannot change, because a force applied along a particular axis cannot change the motion along a perpendicular axis. So let's work out the value of E. E का value क्या होएगा? So velocity before collision, root 2 gh cosine theta along the line of impact. Very good, Chetan. Good. Not bad. Yes. Now the velocity component यहाँ पे जो आ रहा है वो भी v sin theta होएगा, ये भी v sin theta है ना. So what will be the relative velocity after collision? It will be equal to 2v sin theta. So this will be equal to 2 into root 2 gh tan theta into tan theta divided by root 2 gh. 2 tan square theta. So if somebody asked me E का value क्या है इस collision के लिए, 2 tan square theta. Somebody said that if theta
is some particular angle. I don't know. Then what is the value of E? Then I can figure out. What would happen if theta is 45 degrees? What would happen if theta is 45 degrees? What would be the value of E? सर ई की वैल्यू इस केस में फिर 2 हो हाँ जाएगी, लेकिन वो सर पॉसिबल 2 तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, तो इसका क्या मतलब है? नहीं, नो कोलिजन कैसे होएगा? कोलिजन होएगा, लेकिन it is impossible for the velocity of the point particle to become horizontal in that case. It is impossible for the velocity to become horizontal in that case. Okay. थर्टी डिग्रीज होएगा थीटा, ई का वैल्यू आ जाएगा 2/3. That is possible. That is not a problem. Next question. ये आ गया ना सबको समझ में? मैंने क्या किया है? ई के इंडिपेंडेंट क्यों आ रहा है वी? कोई उसका लेना देना ही नहीं है कि कैसा टाइप ऑफ कोलिजन है. Right? Everybody understanding ना? Yes, sir. Next question. Please think about this question, then answer. घटा हुआ है क्या दरबार में? पता था. सही जवाब. सर वो क्या लिखा है? फाइंड द रीडिंग ऑफ वेइंग. चीन को ऐसे ही लिखा जाता है.
हुआ ये वाला. So the answer तो मालूम था. This is a standard sort of question of physics. So at a distance of x, we consider a particle of width dx. So when dx falls, then already a length x is on the weighing machine. Right? Length x already है weighing machine. So नहीं. So what is going to happen is that the force on the weighing machine, when this particle is falling, when the particle is hitting the weighing machine, is equal to the weight of x length of the chain plus the force due to dx coming in contact. Right? After all, you would be pretty convinced by the fact that अगर मैंने अगर मैंने किसी के सर पे if I've kept a brick on somebody's head, single brick, so that won't be much of a problem. That person can carry that brick around. कोई ज़्यादा issue नहीं आएगा. But the moment I will drop the same brick from a 2-story or from a height of 2 floors or 3 floors, that would present a very dangerous problem for the person. Why is it? What is happening? So when the brick hits the person's head, it is not only the weight of the brick that is applying a force on the person's head. It is the fact that because of contact with the person's head, the brick's velocity is rapidly decreasing from root to GH to 0. So the net force applied by the brick on the head, which is equal to the net force applied by the head on the brick, would be equal to the weight of the brick plus this additional force, which is due to the fact that the velocity of the brick is rapidly changing with time from root to GH to 0. So what I will do here is I will calculate this. Very, very simple, not difficult at all. So F will be equal to M by L into G into X. ये तो जो चेन ऑलरेडी रखा हुआ है वेइंग मशीन में, ये उसका फोर्स हो गया. अब जो ये dx विड्थ का जो पॉइंट पार्टिकल वेइंग मशीन के ऊपर गिरा, राइट, ये जो dx विड्थ का जो ये पॉइंट पार्टिकल वेइंग मशीन के ऊपर गिरा, ये कितना फोर्स लगा है? Well, Newton's second law is equal to mdv by dt, which you can write as d by dt of mv, which you can write as dp by dt, right? We've already seen this. F is equal to rate of change of momentum. So here I will write the change of momentum divided by dt. We are assuming that the velocity of the thing
velocity of that thing, rapidly reduces from root 2 gh to 0. So m into final velocity minus initial velocity. I'm just going to take the magnitude. Final velocity, I'm going to take 0. Initial velocity would be equal to root 2 gx. Right? Now this m that I have written, I must write it properly. It should be m by L into dx, because mass of the dx element would be equal to m by L into dx. So I get m by L into g into x plus m by L into root 2 gx into dx by dt. But dx by dt is nothing but v. So we get m by L root 2 gx into root 2 gx, which is equal to m by L gx plus 2m by L gx, which is equal to 3m by L. This would be the reading of the weighing machine as a function of x. सर उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है ना, फाइनल रूट 2 जी है. हाँ, इनिशियली वो रेस्ट पे था ना, नीचे गिरने के बाद उसकी वेलोसिटी हुई ना रूट 2 जी एक्स. हाँ, तो फिर फाइनल वेलोसिटी 0 है ना, मतलब रूट 2 जी. वही मैं बोल रहा हूँ ना. मैंने केवल मॉड लिया ना. मैंने मॉड इसलिए लिया क्योंकि मैं अगर मैं फाइनल इनिशियल वेलोसिटी और dx लेके चलूंगा तब तो मैं फोर्स ऑन दैट एलिमेंट निकाल रहा हूँ ना. लेकिन अल्टीमेटली तो मेरे को फोर्स ऑन दी वेइंग मशीन निकालना है, जो उसका ऑपोजिट होएगा. तो जो मैंने लिखा है वो सही लिखा है. सर अगर चेन पाइल अप नहीं होती तो भी सेम फोर्स ही होता ना. नहीं, चेन पाइल अप हो जाती तो हाइट चेंज हो जाता ना. dx जो ये जब गिरता, they have to be very clever in asking. ये Rudolph का क्वेश्चन है ना. They are very particular about the question. अगर पाइल अप हो जाती चेन, तो ये वाला पार्ट जब गिरता तो it would not have fallen a height h. It would not have fallen a height x. It would have fallen something less than x. So then the situation will change. ठीक है? ठीक है सर. Next question. हाँ, बस खत्म है. एक क्लास और आधी क्लास और. हाँ,
मास की जरूरत है क्या? आई डोंट थिंक मास की जरूरत पड़नी चाहिए। वन के जी ले लो, अगर मास की जरूरत पड़ रही है तो टेक इट एज 1 kg। If mass is required, take it as 1 kg. वाह शाबाश, कैसे निकाला बता? सर जो पहला वेक्टर है उसी जो जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी को मैंने लाइन ऑफ इम्पैक्ट समझ लिया, फिर डॉट प्रोडक्ट से दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल निकाली तो cos थीटा में एंगल आ गया, एंड देन ई की इक्वेशन बस रिलेटिव। तूने बाकी सब कुछ सही किया, एक गड़बड़ कर दी है, वो ये कि तूने इनिशियल वेलोसिटी को ही लाइन ऑफ इम्पैक्ट मान लिया, ये गलत। ओके बाकी जो भी स्टेप्स तूने बताए हैं बिल्कुल सही। ओके सर। सर तो क्या करेंगे अगर उसको नहीं लेंगे तो? सोच, तूने आंसर खुद ही दे दिया है। तूने सेकंड पार्ट मेरे को क्या बताया, क्या क्या किया सर सेकंड पार्ट में मैंने डॉट प्रोडक्ट निकाला। अच्छा तो ओके, तो एक परपेंडिकुलर ले लेंगे और लाइन ऑफ इम्पैक्ट का मतलब ही क्या होता है? सर नॉर्मल टू नॉर्मल टू व्हाट? प्लेन। Normal to what? इस केस में normal to what? The particle has velocity this, it hits a solid surface, and its velocity becomes this. Normal to what? सरफेस मतलब जो सरफेस है, जो हाँ सॉलिड बिल्कुल सरफेस। सही। हाँ हाँ। अब क्या करें? मैं डायग्राम बनाता हूँ। हाँ सर। सरफेस तो हमको हॉरिजॉन्टल तो दिया नहीं है, सरफेस तो कुछ भी आड़ा तिरछा हो सकता है, ये रहा सरफेस में भी, आई डोंट नो। अब इसमें जो पार्टिकल आया उसकी जो वेलोसिटी है वो कुछ ऐसे दी हुई है, और जो पार्टिकल बाउंड तो हो इसको एक जाए, पॉइंट पार्टिकल एज्यूम कर लें। पॉइंट पार्टिकल तो है ही है बे वो। नहीं सर, जो सरफेस जिस मतलब जिससे कोलाइड कर रहा है हमारा फर्स्ट पार्टिकल, उसको एक पार्टिकल एक ही है, पार्टिकल हैज इनकमिंग वेलोसिटी दिस, आउटगोइंग वेलोसिटी दिस।
ये जो रेड वेक्टर है ये पार्टिकल का बिफोर द कोलिजन की वेलोसिटी है, और जो ग्रीन वेक्टर है वो पार्टिकल की आफ्टर द कोलिजन की वेलोसिटी है। येलो लाइन है वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, जो ब्लू लाइन है वो सरफेस है जिससे कोलिजन हुआ। अब ये रेड वेक्टर ग्रीन वेक्टर क्यों बन गया? ये रेड वेक्टर ग्रीन वेक्टर क्यों बन गया? क्योंकि कोलिजन हो रहा है इसलिए, और तो एंगल ऑफ collision- इंसिडेंस नहीं इक्वल नहीं टू नहीं नहीं, हाँ नहीं नहीं नहीं, एंगल ऑफ इंसिडेंस वो सब भूल जाए, क्योंकि अगर ई नॉन जीरो है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस वाला आई डोंट थिंक वो काम करने वाला है। अगर ई 1 होता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हाँ इक्वल टू परफेक्ट एंगल ऑफ, कोलिजन। हाँ हाँ हाँ, तो अगर हमारे पास ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वाली चीज नहीं है, तो मैं फिर से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जिसका तुमने सही जवाब दिया है, लेकिन थोड़ा और साइंटिफिक जवाब देना पड़ेगा। ये ग्रीन वेक्टर रेड से ग्रीन वेक्टर क्यों हुआ, उसकी वेलोसिटी क्यों चेंज हुई? पॉइंट पार्टिकल की वेलोसिटी क्यों चेंज हुई? सरफेस ने उस पर नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्ट किया। सर इम्पल्सिव एन की वजह से। क्योंकि सरफेस ने पार्टिकल के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्ट किया, राइट? ठीक है ना? यस सर। तो अगर पार्टिकल के ऊपर सरफेस ने नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्ट किया तो ये नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन येलो लाइन होना चाहिए। तो पार्टिकल के इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम एंड एक्सटर्नल फोर्स में क्या रिलेशन आएगा? पार्टिकल के इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम और एक्सटर्नल फोर्स में क्या रिलेशन आएगा? व्हाट इज द रिलेशनशिप? F must be equal to delta P upon delta T. ये तो होना चाहिए। यस सर। So F vector must be equal to final momentum minus 2i cap plus j cap minus initial momentum 5i cap minus 6j cap divided by some delta T. F is equal to m divided by delta T into something. क्या है ये समथिंग बताइए? रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी नहीं नहीं भाई, हाँ मतलब रिलेटिव वेलोसिटी है, लेकिन मतलब रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है, बट क्या लिखूं अंदर ब्रैकेट में? माइनस 7i कैप प्लस 5j कैप, ये तो आएगा। यस सर। ये वेक्टर का डायरेक्शन जो है, ये जो वेक्टर है इसका डायरेक्शन इज द सेम एज माइनस 7i कैप प्लस 5j कैप। सर प्लस 7j का होगा ना? यस सर 7 होगा। -2 -5। सर जे में 1 + 6 हो जाएगा ना, 7j का। ओ हाँ सॉरी, हाँ ओह तब तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हो, मैंने बहुत अच्छी वैल्यूज दे दी। ये किस चीज का डायरेक्शन है? ये वेक्टर इज पॉइंटिंग अलोंग व्हाट? सेकंड क्वाड्रेंट। ये वेक्टर क्या है? नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन। यही तो है लाइन ऑफ इम्पैक्ट, यही होएगा ना ये वेक्टर। यस सर। लाइन ऑफ इम्पैक्ट निकाल दिया ना? यस सर। अभी भी लग रहा है समझ में नहीं आया।
देखो एक पार्टिकल की particle has some initial velocity v, has some final velocity vf. The reason why the velocity has changed is because of some external force. So the external force must be equal to m divided by delta t into vf minus vi, right? ठीक है ना? Yes, sir. What this means is that the direction of the force vector must be the same as the direction of what? Direction of what? Vf minus Delta vi. So this means that the direction of force must be Vf minus Vi upon mod of Vf minus Vi. ये आया समझ में? हाँ सर अब आया. अगर m by delta t भी आप ले लोगे तो वो जब आप उसका मॉड लेके डिवाइड करोगे तो m by delta t तो गायब ही होना है ना? हाँ सर. उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. So this will come out to be minus 7i cap plus 7j cap divided by magnitude, which will be 7 by root 2. 7 root 2. 7 root 2, sorry. Minus I cap plus j cap by root 2. This is the direction of force. गलती से ये 45 degrees आ रहा है, आना नहीं चाहिए. So this line of impact is minus I cap plus j cap by root 2. This is the unit vector in this direction. Okay. Now what do you do? अब क्या करें? हमें तो E निकालना है ना? कैसे निकालेंगे? सर लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग वेलोसिटीज निकालेंगे एंड फिर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. बहुत दिन पहले की बात है, मैं एक कहानी सुना रहा था. बेटा बच्चे नहीं याद आ गया समझ. I asked you a question and I said that look, this is vector A and this is vector B. Find the component of A along B. Okay? I said find the component of A along B and find the component of A perpendicular to B. And you are not allowed to use any theta or any, because it is not given. The only thing that is given to you is vector A and B. याद है किसी को ये? हाँ सर. What was the component of A on B? Component of A along B. Tarun, very good. A dot B into vector B Mod A divided by mod B. magnitude of B square. अच्छा mod B square. अगर यहाँ एंगल थीटा होता तो A dot B would be equal to mod A mod B cos थीटा. लेकिन जो वेक्टर A का कंपोनेंट होएगा B के लॉन्ग वो तो mod A cos थीटा होएगा उसका मैग्नीट्यूड. तो mod A cos थीटा का मतलब हुआ A डॉट B अपॉन mod ऑफ B. ये तो मैग्नीट्यूड हो गया कंपोनेंट ऑफ A along B का. और जो डायरेक्शन ऑफ कंपोनेंट है वो तो सेम एज B है, which is equal to vector B upon mod B. So therefore component of A along B must be the magnitude of the thing, which is A dot B upon mod B, multiplied by the direction of the thing, which must be this. So this is equal to A dot B into vector B upon mod B square. ये हमने निकाला था. परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? याद है किसी को? How will I find this component? परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट कैसे निकालेंगे? Subtract by A. Very right. A parallel plus A perpendicular is equal to A.
You already found this. You want to find this. So A perpendicular will be equal to A minus A parallel. And this is A parallel. So now all that remains in this question. All that remains in this question is that you find the component of this velocity vector along this direction. Component of this velocity vector along this direction. Only the magnitude is required. Only the magnitude is required. And then just E wale formula mein डाल दिया जाएगा. ठीक है? Yes, sir. मैं सारी slides दिखा दे रहा हूँ. And I will stop here. I will continue in the next class. Sir, answer CV 5/16 ही है. हाँ? Answer 5/16 ही है. वाह. नहीं मेरे को नहीं 5/16 नहीं है. तुक्का मारेगा तब थोड़ी ना आने वाला. 3/11. 3/11. So first slide. Second. Third. Fourth. Fifth, I think, was this one. Sixth. Seventh. Eighth. Ninth. 10th. ये तो खैर पुराना ही है तो कोई मतलब नहीं इसमें. Okay, so HCV. Now you can start doing Irodov as well. If you finish the booklet, HCV booklet Irodov, and if everything is over, just give me a WhatsApp message. I will send you more exercises. Okay. इसके बाद क्लास है क्या? सीए का सिलेबस यार मुझे मालूम नहीं रहता. कोई क्लास है फिर से है 7:30 के बाद? Yes sir, मैथ्स है. HM sir की. मैथ्स से पहले नहीं हुआ था क्या? नहीं सर. सर केमिस्ट्री था इसका पहले. अच्छा केमिस्ट्री. चलो ठीक है. चलो बाय बाय. Thank you, sir. Thank you sir. Bye, sir. बाय बाय.